Yes, a very good morning. So we were doing exercise 4.1 construction. Up to third question we have done. Get ready with your construction material. And we are going to start with fourth part of 4.1. First question. Fourth part. Construct a rhombus base. This time we have to construct a rhombus, right? Where the sides are given like BE is equal to 4.5 and BE is given to be 4.5 centimeter and ET is given to be 6 cm. बेटे अब अगर हम पहले रफ स्केच इसका ड्रॉ करें, देखिए जरा बेस्ट में बीई और ईटी किसका रोल प्ले कर रहे हैं. Rhombus figure is like a parallelogram. Best में BE is side and ET is diagonal. So it's very much clear from the rough sketch, which is mandatory to draw. Whenever in exam you will be having the question related to construction, so you need to draw the you can say rough sketch first of all. Rough sketch is to be drawn with the basis of on the basis of which, so you know, diagonal, when diagonal is given, you start the construction with diagonal. Yesterday I told you that whenever diagonal will be given to you, you will start the construction with the diagonal. This is diagonal ET. And one property of rhombus we will use, that all sides of rhombus are equal. If one side is 4.5, then the another sides they will also be 4.5 each. So we will start the construction with the diagonal. So draw TE is equal to 6 centimeter. Draw TE is equal to 6 centimeter. Draw TE is equal to 6 centimeter. And then you see that the sides which we are having that are 4.5 each. We are using the property of the rhombus that each side is 4.5. Each side of rhombus is 4.5. That means one triangle is to be constructed above the diagonal and another triangle is to construct below the diagonal. Okay, 4.5. So open the compass of length 4.5 centimeter. Keep the needle at the point P. Cut an arc like this. Now the needle is open. Compass is open till the length of 4.5, and you will keep it same because all sides are going to be equal. So keeping the needle at the point P, cut the previous arc 4.5 centimeter. Join where the arcs are meeting, and according to figure, this point is P. Rough sketch is mandatory to draw. Now you have to construct one triangle below. The S is the point on the lower side, so 4.5. Keeping the needle at the point B, this is 4.5. Then keeping the needle at the point E, this will be 4.5, and this point is going to be S. Join. This is 4.5. अब हम steps of construction लिखते हैं. First step, draw TE या ET, name ET दिया हुआ है तो ET. Draw ET is equal to 6 centimeter.
Second, taking P as center, draw an arc of 4.5 centimeter above PT. Taking E as center, draw an arc of 4.5 centimeter above PT. Cutting the previous arc at B. Cutting the previous arc at B. Next is join BT and join BT and BE. Join BT and BE. Next step of construction. Fifth step. Taking T as center, draw an arc of length 4.5 centimeter below ET and taking E as center. नेक्स्ट पॉइंट कर लो ये लो ईटी आपने 4.5 का आर्क लगाया 6 टेकिंग ई एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क of 4.5 centimeter below ET, cutting the previous arc at S. 7 point. Join TS and ES. Join TS and ES. Join TS and ES. Next step 8. Best is the required rhombus. Yes, Amarjot? मैम हम वैसे भी बना सकते हैं कि 4.5 की लाइन सेगमेंट ले लें फिर उसको मार्क लाइन 4.5 से फिर 6 सेंटीमीटर से मार्क लाइन Bete, I told you whenever we are having in the rough sketch where we draw the rough sketch, we come to know that one diagonal is given. You have to start the construction with diagonal, right? वैसे नहीं बनेगा बन तो जाएगा बट एक तरीका रखो ना अपने पास डायगोनल वाला जो हमारे पास गिवन होगा उसको हम डायगोनल से ही स्टार्ट करें तो बेटर है ओके चलिए so I told you construction के step if it is told if it is asked only then are to be mentioned but the property used is to be mentioned every time ये जरूर लिखना है ये वाला step जरूर लिख के आना है ये जरूर लिखना है best is the required rhombus if the steps are not to be asked and property used is to be written it is must property used all sides
of a rhombus are equal. All sides of a rhombus are equal. Properties. ठीक है, property use is to be written must. Write down the steps of construction with the help of which you will come to know the idea. Right? चलिए, so this is all about the first exercise. Try this we'll do later. बाद में करेंगे try this इसके पहले हम सारे questions कर रहे हैं. चलिए, let us start with exercise 4. Now we have finished the construction when one diagonal and all the 4 sides are given to us. Okay, so we did the construction. We come to know, we learn that how to draw a quadrilateral in which one diagonal and all other sides are given to us. Next is the construction in which we will learn how to draw a quadrilateral, when 2 diagonals and 3 sides are given. Now, when 2 diagonals and 3 sides are given. 2 diagonals and 3 sides are given. How to construct a quadrilateral in that case? Let us learn. So we'll do it with the help of question. So I'm going to start with exercise 4.2. Question number first part. Draw a quadrilateral lift. Quadrilateral का नाम हमारे पास लिफ्ट है. लिफ्ट क्वाड्रिलेटरल हमें जो है वो ड्रॉ करना है in which Li is equal to 4, If is equal to 3, TL is equal to 2.5, LF is equal to 4.5, and IT is equal to 4. And lift quadrilateral is to be drawn in which these things are given to us. So as I told you earlier, that rough sketch is going to be the main feature. रफ स्केच जो आपका है वो आपका मेन फीचर होगा. Rough sketch is to be drawn first. Let us roughly see how we can draw the lift quadrilateral. अगर मैं यहाँ पे लिफ्ट क्वाड्रिलेटरल की आपके सामने बात करूं तो इट्स वेरी मच क्लियर कि इसको ड्रॉ करने के लिए आप इसको ऐसे सीधा लिफ्ट ऐसे करो. देखो क्या क्या गिवन है, लिख दो. Li गिवन है 4, If गिवन है 3,
TL given है 2.5, LF given है 4.5, and IT, another diagonal, it is given to be. That means this time this side is not with us. ये साइड हमें नहीं दी हुई, ठीक है, हमें दिया हुआ है दो डायगोनल्स और तीन साइड, जिसकी हेल्प से वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस क्वाड्रिलेटरल. चलिए, so first of all, in from this rough sketch, one thing should be clear to you, that firstly you have to construct a triangle in which all things are given to you. ये सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें तीनों की तीनों चीजें गिवन, राइट. तो आप देख सकते हो कि जो ट्राइंगल मैंने सर्कल किया है उसमें द डायगोनल LF इज गिवन टू अस व्हिच इज 4.5. तो हम LF से शुरू करेंगे ड्राइंग. So I'm drawing LF is equal to 4.5. So we know when one diagonal is given, you have to start the construction with the diagonal. Now two diagonals are given. This is up to you that you with which diagonal you will start the construction. So we'll start the construction with that diagonal in which other two sides are given, or that triangle of the diagonal in which the two sides are given to us, as I'm making it, right. So ऊपर वाला triangle LI is 4. Keeping the needle at the point L, mark an arc of 4 centimeter above. And your FI is 3. Keeping the needle at the point F, mark an arc of 3, and take this point to be 5. LI, I. Now here on the other side, this is T. नीचे कोई point T आएगा, उसके accordingly LT हमारा 2.5 है. Keeping the needle at the point L, cut an arc of 2.5. सारी चीजें जो जो चीजें यूज कर लेते हो ना उसको टिक करी जाए. ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, रह गया IT. IT मतलब I पे नीडल रख के you have to make T is in this direction, so IT इस डायरेक्शन में आर्क लगेगा. Keeping the needle at the point I, you have to cut an arc of 4 centimeter. यहाँ पे ऐसे रख के previous arc को कट कर दो, and this is T. IT को join. IT is 4 centimeter. Keeping the needle at the point I, below LF, cut an arc. T पे उसको मीट कर. Now T point you got, join LT and TF. Join LT and TF. So let us start with the steps of construction. I'm dictating you because I want to tell you that it is a better way to learn if we are writing the steps of construction aside. Yes, Ridham? मैम एक बार फिर से समझा दोगे? हाँ, मैं साथ साथ जैसे कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखवा रही हूँ, इट विल बी अ रिवीजन. ओके, तो हमारे पास जो जो चीजें गिवन है एक बार मैं दोबारा लिखूं. LF था हमारे पास 4.5, वैल्यूज लिख लो, एंड LI was 4, IF was 3, TL 2.5, and IT was 4. सब कुछ नहीं. So first of all, write down, draw LF is equal to 4.5. फर्स्ट स्टेप. तो सबसे पहले हमने डायगोनल से शुरू किया, LF से.
डायगोनल नो डाउट आईटी भी दिया हुआ है, पर उसके अकॉर्डिंगली हमारे बाकी साइड जो है नीचे वाली मुश्किल हो जाती है हमारे रफ स्केच के अकॉर्डिंगली वी शुड ड्रॉ एलएफ फर्स्ट. सो नाउ टेकिंग L as center, draw an arc of 4 centimeters above LF. Third, taking F as center, draw an arc of 3 centimeters above LF, meeting the previous arc at I. Meeting the previous arc at I. So here, next step, join LI and IF. Join LI and IF. ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट होगी ऊपर वाले. Starting with the next step. ये गिवन था हमें, दिस इज सी पॉइंट, ये गिवन था तो इससे शुरू करेंगे. नेक्स्ट स्टेप पे टेकिंग एल एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of 2.5 centimeters below LF. ठीक है, अब हमारे पास ये गिवन था, हमने आई से लगाया था. नेक्स्ट स्टेप टेकिंग आई एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of 4.5 centimeters below LF, cutting the previous arc at T. Cutting the previous arc at T. Next, join LT and F. 7. Join LT and F. So here, कोई प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं की, जस्ट सिंपली हमने ड्रॉ किया. सो नेक्स्ट, लिफ्ट इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर. Lift is the required coordinator. हाँ जी जी अंत. मैम 4 सेंटीमीटर की मैम आर्क लगानी है इसमें. हाँ ठीक है, ओके. सो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, अदरवाइज इसके सारे के सारे पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे. बिकॉज अगर मैं आपको रोम्बस बनाना भी सिखा रही हूँ डायगोनल्स के साथ, तो आपको एक बार अपनी कॉपी पे दोबारा बना के प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो ऑल द पार्ट्स विल बी होमवर्क. So now I am considering the third part of the same question, number first, third part. First question का third part. Construct a rhombus band. Now we are to construct a rhombus band in which Bn is equal to 5.6
centimeter and DE is equal to 6.5. ठीक है, अगर हम इसको रफली सा बेंड को अपने पास रफ स्केच देखें तो बेंड विल बी लाइक दिस. This is BN. BN is given to be 5.6 and DE is given to be 6. Now the thing is, हमारे पास सिर्फ डायगोनल्स गिवन है इसका, कोई साइड हमें रोम्बस की नहीं गिवन. ये बच्चे क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आ भी जाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन में भी रहते हैं, तो गलत करके आते हैं मोस्टली. तो बेटर है कि हम इसको अच्छे से सीखें, राइट. So band is a rhombus which is to be drawn whose two diagonals are. अब बेटे सिंपली सी मैं आपको एक प्रॉपर्टी पहले समझाऊंगी रोम्बस के डायगोनल्स की. हमने क्वाड्रिलेटरल में किया, ये होते हैं रोम्बस के डायगोनल. They are not equal. इक्वल नहीं होते, आपको गिवन से ही पता चलना चाहिए. एक 5.6 है, दूसरा 6.5. They are not equal. सेकेंड प्रॉपर्टी लिखवा रही हूँ डायगोनल की, मैं यूज करेंगे. They bisect each other. They bisect each other at 90 degree. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब where these diagonals meet, there they form 90 degree. And where they meet, that point bisect them. That means if they are meeting at O, तो ये वाला डायगोनल अगर मैं इसको AC देखती हूँ, इसका आधा हिस्सा ऊपर होगा एंड सेम आधा हिस्सा नीचे होगा. बाइसेक्ट का मतलब एक ऐसा पॉइंट पे वो मीट करते हैं जो पॉइंट उन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. If another diagonal I am taking BD, so half will be on left side of BD and half will be on the right side of BD. This property of diagonals I am going to use in constructing the given rhombus. Now the thing is, एक चीज आपके दिमाग में यहाँ पे आपने रखनी है कि दो डायगोनल्स है, कंस्ट्रक्शन डायगोनल से स्टार्ट हुई. आपके पास you see one diagonal is an even number and another diagonal is an odd number. एक डायगोनल आपके पास इवन नंबर है और दूसरा डायगोनल आपके पास ऑड नंबर है. अगर तो दोनों इवन है तो आप किसी से भी स्टार्ट कर दो, बट इफ वन डायगोनल इज इवन अनदर इज ऑड, विल स्टार्ट विद ऑड डायगोनल. ये इसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगी क्यों. सो मैंने DE से स्टार्ट. ड्रॉ DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. Diagonals bisect each other at 90 degree. हमें पता है कि डायगोनल्स जो है रोम्बस के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले यहाँ पे इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने से हमारे पास एक ऐसी लाइन आ जाएगी जो 90 डिग्री पे भी मीट करेगी और जो इसको बाइसेक्ट भी करेगी. एंड यू नो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट. ओपन द कंपास मोर देन हाफ. मान लो ये कंपास है, मेरे दोनों हैंड्स को इमेजिन करना, ये कंपास का नीडल है, ये पेंसिल है. मोर देन हाफ को, ये मोर देन हाफ है, DE का मोर देन हाफ. कीपिंग द नीडल एट द पॉइंट D, कट एन आर्क above DE and with same length cut an arc below DE. Keeping the needle at the point D, cut an arc above DE, cut an arc below D. आपने किया, सीखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 7th में 6th में यू हैव लर्न. अब आइए जरा E पे. अब आपने जितनी नीडल खोल ली है मोर देन हाफ, जिससे आपने आर्क लगाए, उतनी ही नीडल आपने खोल के रखनी है, ज्यादा या कम नहीं करना. सो कीपिंग द नीडल एट द पॉइंट E, cut an arc above and cut an arc below. ठीक है, cut an arc above, cut an arc below. तो ये आपका ये जो पॉइंट आए, स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर दो. ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना. मान लो इसने O पॉइंट पे DE को मीट. ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ये डायगोनल की इस एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इट इज मीटिंग दिस DE एट 90 डिग्री. दूसरी प्रॉपर्टी हम इसमें ले आएंगे और ये रोम्बस का दूसरा डायगोनल बन जाएगा. क्या होगी दूसरी प्रॉपर्टी? दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब अगर ये डायगोनल बनना चाहता है, कौन सा डायगोनल? 5.6. अगर ये 5.6 डायगोनल बनना चाहता है तो इसका आधा हिस्सा O के ऊपर होना चाहिए, आधा हिस्सा O के
नीचे होना चाहिए. हाफ पार्ट ऑफ इट शुड लाई अबव O एंड हाफ पार्ट ऑफ इट शुड लाई बिलो O. अब 5.6 का हाफ करो, 2 से डिवाइड करो, दिस इज 2.8. इसका मतलब 2.8 should lie above O and 2.8 should lie below O. 2.8 above and 2.8 below आपके lie करना चाहिए. अब आपको बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा कि क्यों मैंने 6.5 को पहले लिया, क्योंकि had it been 5.6 initially तो आपको 6.5 का हाफ करना और उसको 3.25 को स्केल पे मेजर करना मुश्किल हो जाता. दैट्स व्हाई मैंने ओड वाले को पहले ड्रॉ कर, इवन वाले को अपने पास रखा. अब इसका हाफ हुआ 2.8. तो व्हाट यू हैव टू डू, O पे नीडल रख के 2.8 की कंपास खोल के 2.8 ऊपर मार्क कर दो एंड उसी तरह से O पे नीडल रख के 2.8 की कंपास खोल के 2.8 नीचे मार्क कर दो. दैट मींस मैंने इस परपेंडिकुलर में से 5.6 हिस्सा ले लिया. इस तरह से लिया दैट 2.8 O के अबव है एंड 2.8 O के बिलो है. तो ये हुआ B, E, ये हुआ N. मार्क कर दो, ज्वाइन कर दो. तो दिस टाइम्स वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस. हमने रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज की. द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. Diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. तो steps of construction हम इसके लिखेंगे. Draw DE is equal to 6.5 centimeter and draw इसका नाम रख दो, B है हमारे पास, T रख दो, S. Draw ST perpendicular bisector of D. Draw ST perpendicular bisector of D. Meeting DE at O. ये जो perpendicular bisector हमने बनाया, ये DE को कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है? O पॉइंट पे. Next step, taking O as center, cut an arc above and below O of length 2.8, ब्रैकेट में लिख लो 5.6 upon 2, इसका हाफ. cut arcs लिखो above and below O of length 2.8, meeting ST at B and N. Meeting ST at B and N. सारे पॉइंट्स आगे. Join BE, EN, ND and DB. So bend is the required rhombus. And the property that you are using, property use, very important to write, whether it is asked or not, you have to write. Property use, diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. Diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. So this is all about today's lecture. We'll continue tomorrow. Just make it on your copies and your notebooks of the previous chapter for checking. Okay? Take it seriously. Don't take it casually. Okay?